Mythpat started a new podcast and currently it's India's #1 podcast on Spotify. In today's episode, we're going to deep dive into why Mythpat started a new podcast, why is it on Spotify, and why more and more creators are jumping onto the creative game of podcasts. So, podcasts in India have been on the rise since like lockdown 2020 and तभी से long form content और ये सब चलने लगा था. But क्योंकि हम लोग podcasters हैं तो हम लोग को पता है कि podcast कौन एक्चुअल में conversation बनाने के लिए कर रहा है या फिर सिर्फ कोई ट्रेंड के लिए कर रहा है. तो शान भैया, why do you think that creators are jumping into podcasts? ठीक है, तो ये जानने के लिए कि इंडियन पॉडकास्टर्स क्यों इतना पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं, we first have to understand the benefits of podcasting. सबसे पहला बेनिफिट ये है कि एज अ क्रिएटर, क्रिएटिंग पॉडकास्ट इज वन ऑफ द ईजिएस्ट फॉर्म्स ऑफ क्रिएशन. आई नो कि हम लोग शायद कुछ पॉडकास्टर्स को ऑफेंड कर जाएंगे, बट इट इज़ द ट्रुथ. इफ यू हैव सम काइंड ऑफ अ नॉलेज इन स्पीकिंग, तो यू कैन स्टार्ट अप अ पॉडकास्ट लाइक दिस. सेकेंड पॉइंट, और ये इंडिया सेंट्रिक है, कि इंडिया इज राइट नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर पॉडकास्टर्स. अकॉर्डिंग टू द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आउटलुक रिपोर्ट, in 2020, it said that India has emerged as the third largest podcast listening market in the world after China and US, with the total number of monthly listeners being 57.6 million listeners. That is a huge, huge number. And third point, thoda ek particular creator ko leke hai. Third point is that as a podcaster, you develop a much bigger, deeper and stronger relationship with your listeners. क्योंकि आपके लिसनर्स आपको सुन रहे हैं फॉर अबाउट 2 to 3 hours एट अ स्ट्रेच, आपका एक रिलेशन बन जाता है उनके साथ. एंड दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर फैंस इमर्जेस. सुपर फैंस को क्रिएटर इकोनॉमी में ऐसे डिफाइन कर जाता है: एनी फैन हु इज विलिंग टू पे फॉर योर कॉन्टेंट और इज सुपर रिलेटेड to your content, that they are taking care of all your updates, where you go, and basically are a part of your life. Those fans are called super fans. Or podcasting is one great way to get super fans for your brand. One of the biggest examples for this is Prakhar Gupta, or as a lot of you know him as Prakhar Ke Pravachan. He has a podcast and he live streams quite a few times as well. And he has a very, very deeper connection with his audience. And that can be seen कि वो अपना courses और अपने workshops के through इतना revenue generate कर लेते हैं that he can actually sustain his team of about 10 to 12 people. And he has gone on record to say this. So you can understand that podcasting is one way to get a lot of superfans. And again, those superfans can actually turn into making your creation career a full-fledged profession. And the last and the most important benefit right now is Spotify. So Harsh, why Spotify? So Spotify is literally raining money right now. अगर US की बात करें तो Spotify ने जो रोगन के साथ $100 million की डील साइन की है. I know we don't have you that long. Why do you think you got more famous because of Spotify? I feel like you became a household name after Spotify. I don't know. Yeah. I think as people realize there's a lot of money in this shit. Really? Yeah. You think you're that's probably it? right about that. Yeah. I think that was a big factor where people, it was like, It was eye-opening. it was like one of those moments in a movie where the record skips. Yeah. And they're like, ऐसे ही Call You Daddy नाम का एक पॉडकास्ट है, उसके साथ $60 million की साइन की है. एंड आई ऑल्सो फील कि Spotify ये चीज़ इंडिया में भी ला रहा है क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी सारे पॉडकास्ट वो लोग अक्वायर करे जा रहे हैं. And I think Spotify is using the Netflix strategy which Netflix actually used in growing the YouTube channel. तो Netflix ने क्या किया था, ऑलरेडी established creators को लेके वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया और इससे उसका खुद का YouTube चैनल भी ग्रो हो गया. तो सिमिलरली Spotify भी established creators को टारगेट कर रहा है और उससे नए ऑडियंस उन लोग Spotify पे जा रहा है और Spotify का लिसनरशिप बढ़ रहा है. जैसे रणवीर अलाबादिया का पॉडकास्ट हो गया, वेदांत रस्ती का पॉडकास्ट हो गया, ध्रुव राठी का पॉडकास्ट हो गया. तो जब इन लोगों ने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया और Spotify पे डाला तो Spotify की खुद की लिसनरशिप इंडिया में बढ़ गई, उसकी डाउनलोड्स इंडिया में बढ़ गए. सो सिमिलरली इफ दे गेट Mythpat as a podcaster, they are just benefiting out of this because they are getting more and more listenerships. But question ये है कि out of all these creators, why Mythpat only? So yes, that is the biggest question right now, ki why Mythpat only? Mythpat is one of India's biggest creators, especially in the gaming genre, and he has over 9 million subscribers right now.
And he is one of those creators who has done so many brand collaborations already. He has collaborated with Netflix, with Wow Skincare and all those brands, and also has been interviewed by top news TV channels. He is also one of those creators who hardly participates in any kind of controversy, and that kind of sets Mythpat apart by making his brand image very, very brand friendly. Mythpat and Spotify are marketing this podcast as a gaming podcast. हाँ, तो Spotify आपको डाउनलोड करने का है, फिर द मिथपैट पॉडकास्ट को सर्च करने का है। वहाँ पे हर हफ्ते आने वाला एक नया पॉडकास्ट, ये एक्चुअली होने वाला है इंडिया का पहला गेमिंग नहीं टाइम पास पॉडकास्ट। हाँ, दोनों होने वाला है, गेमिंग पॉडकास्ट, टाइम पास पॉडकास्ट, सब कुछ होने वाला है वहाँ पे। मैं तो खुद से भी बात करने वाला हूँ। Which they are primarily doing to get the gaming audience onto Spotify. Mythpat primarily gameplay videos upload करता है, and this podcast could be a way for him to connect on a deeper level with his gaming audience. And the last point, and the most important point, is very, very personal to Mythpat. Mythpat has gone on record to say that podcasting helps him express himself. पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक ये पॉडकास्ट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन इज टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। जो भी चीजें मैं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू नहीं कर पाता, बिकॉज अपना जो कंटेंट होता है उसमें सब चीजें नहीं कर सकते। ट्रू। सो इसमें ऐसी दिल की जो बात होती है। एंड इट इज क्लियर कि Spotify का ये जो बेट था, इट हैज टर्न्ड आउट वेरी, वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज एज ऑफ नाउ द रिकॉर्डिंग टाइम ऑफ दिस पॉडकास्ट, Mythpat's podcast is currently number 1 on Spotify's India's list. So what you can learn from this is that इंडिया में पॉडकास्टिंग का फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, क्योंकि न्यूज़ टीवी चैनल्स और रेडियो शोज़ भी खुद के पॉडकास्ट ला रहा है। और Spotify तो एक कंपनी है, इंडिया में आजकल बहुत नई नई कंपनीज खुल रही है जो इंडियन पॉडकास्ट पे इन्वेस्ट और बेट करने के लिए ऑलरेडी रेडी है। रणवीर ने भी अपने एक वीडियो में टीज किया था कि उसकी खुद की पॉडकास्ट की वैल्यूएशन फ्यूचर में 700 करोड़ तक पहुंच सकती है। Joe Rogan about 11 years to win $100 million contract. $100 million is 700 crores. And considering the fact that we also have a Hindi version of the podcast, that we've sort of got a first movers advantage in India, and that we're staying consistent with our production, I believe that $100 million contract of sorts is in the pipeline for us. So you never know, you can sign the next multi-million-dollar deal just for talking. So this was our breakdown on why Indian creators are jumping onto the podcast scene, why Mythpat is starting his own podcast, and why Spotify is taking such big bets in the Indian podcasting scene. So that's it guys, my name is Harsh and this is Shayan, and if you want to know more about the insights of the creator space, then do subscribe to our channel. बाकी अगर ये जानना हो कि इस पॉडकास्ट में और हम क्या क्या करने वाले हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ओवर हियर।